Hello and assalamu alaikum class 5th. How are you all? So today our topic is India in chapter number 8, Pakistan and her neighbor countries. So India is a much larger than Pakistan. Almost that 5-6 times of India population make पाकिस्तान पॉपुलेशन मेक इंडिया, क्योंकि इंडिया की आबादी तकरीबन 1 बिलियन से अबव है एंड पाकिस्तान आबादी इज़ 2019 रिकॉर्ड पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ 22 करोड़. सो आप ख़ुद सोचें कि इंडिया जो है वो हमारे पास काफ़ी पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा है और एरिया वाइज भी. It has an area of 29,73,190 square kilometer and population of over 1.3 billion people. Most of the people in India are Hindus, but there are also a large number of Muslims, Buddhists, Sikhs and Christians. It is basically an agriculture country, but over the year has developed many large industries, especially in information technology, and now has a strong economy. So Indian population is 1.3 billion, and the most people are basically Indian, but there is a large number of Muslim. In almost 30 crore of Muslims are living in India, and beside of Muslims and Hindus, Buddhists, Sikhs and Christians are also living in India. India is also an agriculture country, but over the years India focused on information technology, and now the most of the famous sites like I think Google, in Google something post India पर्सन, गूगल की एक पोस्ट भी इंडिया का पर्सन है, आई थिंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि क्या है. इस तरह से बहुत सारे अगर आप लोग देखें तो आईटी में इंडिया जो है वो बहुत ही आगे है पाकिस्तान से, एंड नाउ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी है उसकी. In the southern part of India, there is a large plateau called the Deccan Plateau. In the north, the country is separated from China by the Himalayas, like the Indus in Pakistan. There is a great river in India called the Ganges, and the river rises in the Himalayas to the north and flows eastward across India into the Bay of Bengal. So, in South India, there is a plateau called Deccan Plateau. In the north, country is separated by China border. So China India border, the Himalayas range. So like the Indus in Pakistan, जिस तरह से दरिया सिंध है पाकिस्तान में, इस तरह से एक बहुत बड़ा दरिया है रिवर गंगा जिसे दरिया गंगा कहते हैं. ये उनका एक मुक़द्दस दरिया भी है. सो ये दरिया जो है ये हिमालय से ही राइज होकर टू द नॉर्थ और बहता है कि ईस्ट वर्ड अक्रॉस बे ऑफ बंगाल की तरफ. द डेक्कन प्लेटो covers most of the southern part of the India. So इस तरह से ये डेक्कन प्लेटो जो है ये सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया को कवर करता है, क्योंकि ये हाई प्लेन ऑफ एरियाज जो है ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही पाए जाते हैं. द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. द ऑफिशियल लैंग्वेज आर हिंदी एंड इंग्लिश, बट मैनी अदर लैंग्वेजेस आर आल्सो स्पोकन इन इंडिया. So New Delhi, a capital city of India, official language is Hindi and English, but many other languages is spoken in India. You can search it Sanskrit, Urdu, Bengali, Gujarati, many languages, because India there are many religion of people are living there, many different areas, because India have a very large area. Now next is Pakistan relationship with Muslim country. So
above all the country is the neighboring country of Pakistan, but Pakistan also keep relationship with Muslim countries. So apart from its neighboring country, Pakistan enjoys good relationship with other Muslim countries too. There is also a small nation in Europe, Albania, which has a Muslim population. सो पाकिस्तान सिर्फ अपनी नाइबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुक़ात नहीं रखता, बट अपनी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुक़ात जो है वो सही रखते हैं, और साथ में अपनी जो बाकी कंट्रीज़ है, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप और अमेरिका, उनके साथ भी क्या करता है, उनके साथ भी अच्छे ही ताल्लुक़ात रखते हैं. सो मेजर ग्रुप हमारे पास यहाँ पर है नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका. सो में हमारे पास है मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, सेनेगल, गैम्बिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया एंड चाड. नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया एंड Djibouti. The Middle East, Turkey, Yemen, Syria, Jordan, Lebanon, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, the United Arab Emirates, Oman and Iran. Southeast Asia, Bangladesh, Malaysia, Brunei and Indonesia. Central Asia, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Azerbaijan. So these are the countries which are located in these areas. They are all member of Organization of Islamic Cooperation (OIC), which meets from time to time to talk about the problems they are facing. By working closely together, these countries have made progress in many fields. So these Muslim countries have on corporation by name of OIC. This corporation meets time to time and talk about the problems which are they facing, and by this corporation they progress in many fields. Interdependency, एक दूसरे पर इन्हिसार. So you already know that every person is dependent, that we are dependent at each other. Like कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा person, कोई ऐसा चीज़ हो जो सिर्फ अकेला ही सब कुछ कर सकता हो, इसको किसी और की ज़रूरत ना है. सो जस्ट लाइक द पर्सन, द इंटरडिपेंडेंसी इज़ द reliance or dependence of two or more individuals on each other. So what is interdependence? Interdependence is a dependence of two or more individual on each other. जब किसी दो पर्सन एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं तो उसको कहते हैं interdependence. In today's world, this dependence has increased even more. Each of us depends on other to fulfill our needs. Like if we depend on another, so for what? For our needs. अगर किसी की ज़रूरत नहीं होती तो फिर हम किसी और की तरफ देखते नहीं हैं. तो इस वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ भी डिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पर इन्हिसार होता है. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वुडन फर्नीचर. इट इज़ मेड बाय अ कारपेंटर. वी मे डिपेंड on a carpenter to fulfill our needs for furniture. The carpenter needs clothes for which he depends on the tailor. The tailor needs a sewing machine which is made in a factory. Everybody depends on a farmer to grow or feed or food. Farmer needs tailor and carpenter and machinery. Interdependence is clear to see. Now in this example, it's clear and show that every person and everything is interdependence on each other. So nobody can produce everything they need by themselves. We are interdependent. Just like people, country also depend on one another. Their requirements and needs in the form of goods and services of one country can be met by purchasing these from another country. This is one reason why countries need to maintain good relation with each other. So it shows that every country need a good relation with other country, because nobody can produce everything they need by themselves. कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि वो सब कुछ अपने लिए बना सकती है और उसको किसी बाहर की कंट्री से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती. चाहे हम अमेरिका ले लें या चाइना ले लें, उसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी दूसरी कंट्री से.
सो इस वजह से एक दूसरे कंट्री एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ात इसलिए भी अच्छे रखते हैं ताकि क्योंकि उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ अबाउट द chapter number Pakistan and different neighbor country and also the interdependence on each other. If you have any question regarding this chapter, you can ask in the comment section. Thank you so much.